बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CSS पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट के 20 MCQs जो 2018 के CSS एग्ज़ाम में आए थे उसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मार्क्स एंड एंगल्स produced the famous book Communist Manifesto in which year? Option A 1848, option B 1845, option C 1883 and option D none of these. तो डियर व्यूअर्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1848। क्वेश्चन नंबर 2, मोंटेस्को was by birth belong to option A Germany, option B England, option C France and option D none of these. तो डियर व्यूअर्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी फ्रांस, यानी मोंटेस्को बाय बर्थ बिलोंग टू फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 3, a bicameral legislature is most suited to option A unitary states, B federal states, C theocratic states and D none of these. तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी फेडरल स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म? ऑप्शन ए कंसेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू, बी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, सी डॉक्ट्राइन ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो डियर व्यूअर्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, अरिस्टोटल was the famous student of option A Anaxagoras, option B Hermes, option C Socrates and option D none of these. तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी नॉन ऑफ दीज। अरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट था। क्वेश्चन नंबर 6, प्लेटो रोट द फेमस बुक ऑप्शन ए लेविथान, बी द रिपब्लिक, ऑप्शन सी द क्लाड एंड डी नॉन ऑफ दीज। तो डियर यू इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी द रिपब्लिक, क्योंकि लेविथान बुक जो है वो थॉमस हाब ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड मैकाउली डाइड? ऑप्शन ए 1469, ऑप्शन बी 1527, ऑप्शन सी 1523 एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो डियर यू इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1528 और बर्थ डेट ईयर 1469 है। क्वेश्चन नंबर 8, द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन द सेंस ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर was postulated by option A Mark, B James Mill, C Spencer and option D none of these. तो डियर भी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉन ऑफ दीज और ये कंसेप्ट जेरी पेंदम का था। क्वेश्चन नंबर 9, लिबरल डेमोक्रेसी मीन्स ऑप्शन ए गवर्नमेंट बाय मेजॉरिटी, बी गवर्नमेंट बाय पीपल, ऑप्शन सी लिमिटेड मेजॉरिटी रूल एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो डियर का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी लिमिटेड मेजॉरिटी रूल।
क्वेश्चन नंबर 10. The doctrine of proportionate equality was pronounced by option A Aristotle, B Rousseau, C Marx and option D none of these। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 11। जर्नल will as a concept was introduced by which philosopher? Option A Rousseau, B Hobbes, C Locke and option D none of these। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए जीन जैक्स रोसो। क्वेश्चन नंबर 12। द सेंटर ऑफ लर्निंग to the Greeks was the city-state of option A Sparta, B Athens, C Carthage and D none of these। तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एथेंस। क्वेश्चन नंबर 13। टू treatise on civil government was written by which philosopher? Option A Thomas Hobbes, B Montesquieu, C John Locke and option D none of these। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 14। अल्लामा मोहम्मद इकबाल characterized as the sharp agent of devil to a political philosopher, namely A option A चांकी कुतलिया, B Macaulay, C Karl Marx and option D none of these। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी Macaulay। क्वेश्चन नंबर 15। The concept of sovereignty was introduced for the first time into politics by option A Hugo Grotius, option B Jean Bodin, C Thomas Hobbes and D none of these। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जीन बोदेन। क्वेश्चन नंबर 16। द ग्रेट but ungrateful pupil of his master who was burned in 384 was option A Plato, B Aristotle, C Socrates and D none of these। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 17। An essay understanding was published in 1690 is the most important work of concerning human। Option A J.S. Mill, B Bentham, C Thomas Hobbes and D John Locke। तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 18। The sovereignty in Islamic political system belongs to option A Majlis Shura, B Caliph, C Muslim population and option D Allah Almighty। तो डियर व्यूअर्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी अल्लाह अलमाइटी। क्वेश्चन नंबर 19। It is normally the technique of pressure groups to impress the legislature। Option A convincing, B lobbying, C propaganda and option D none of these। तो व्यूअर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लॉबिंग। क्वेश्चन नंबर
20. Modern political thought begins with which philosopher? Option A. Niccolo Machiavelli, B. Montesquieu, C. John Stuart Mill, and option D. None of these. तो डियर व्यूअर्स, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिकाउली।